Thank you very much. I'm honored to be here. Uh, First of all, as the secretary pointed out, I'm not a politician. So basically, I have a perspective that I want to share with everybody. Many may not agree with what I say, but that is something, I mean, nobody is supposed to agree with me, actually. So the subject really is not Operation Sindoor. The subject is Operation Sindoor in the times that we live in. That is important. Because if we understand the times that we live in, then it'll be easy for us to understand what will happen after Operation Sindoor. And that should really be the focus. So it's really three parts. One is the times we live in, Operation Sindoor, very briefly, what happened in those 4 days, just the high points. And after that, what is likely to happen. So let me start with the first one, the times we live in, which is basically talking about global geopolitics and South Asia. Now, everybody is aware that the world has changed. And it has changed because of the rise of China. The rise of China has done four things to the global geopolitics. The first thing is that the geopolitics, until the rise of China, which used to happen in transatlantic area, it was limited to America, limited to the Western European theater. Now it has come to our region, Asia Pacific. This is important. I'll explain why it is important. The second is, today the world is multipolar. The third is, in the multipolar world today, there are three great powers. And the fourth is, there are two governing systems today in the world. Very briefly, I'll touch on all these four because there's a lot of area to be covered. Now, when we say a multipolar world, what we are saying is that there are 193 countries under the United Nations, big and small. Now, it must be the aspiration of all the 193 countries to be respected by the others and ideally to have their own foreign policy without pressure or intimidation from outside powers. That is a multipolar world. Now, in this multipolar world, we have three great powers. By definition, a great power is a country which has the capability to influence events anywhere in the world. And if you take this as a definition, there are only three countries which qualify. And they are America, China, and Russia. So we have a multipolar world, we have three great powers. And now what has happened is that the geopolitics has come to our region. This is absolutely critical. What means is that until now, until this happened, and this year, generally all the experts in the world believe happened in 2017 during the first Trump administration. The rise of China was acknowledged by America. What this means is that if this is where everything has to happen, that means all the three great powers will now be focused in this region. Which means that South Asia and India, which used to be the fringe of the global geopolitics. What fringe means is that we used to make our foreign policy based on three factors earlier. The three factors were geography, history, and national power. When we talk of national power, we are talking of three things basically. And they are economy, military power, and technology. And technology guides the other two. So it is the foundation for both the economic power as well as the military power. Now we have to add another factor, which is global geopolitics that has come in. बहुत सिंपल वर्ड में इसका मतलब ये है, हम आज वहाँ बैठे हैं जहाँ the entire world is focused here, and especially the three great powers. So we have an opportunity today where all the three great powers need India. And see, all this happened when Prime Minister Modi came to power in May of 2014. As I said, the world changed in 2017. So ये एक opportunity हमारे पास आई थी और हमने उसको avail किया है नहीं किया है, that is the question which I'll answer in a while. And the fourth thing I said is that there are two governing systems. Now what that means is, this is unprecedented, कभी नहीं हुआ ये. There is one system which is the extension or the follow-on
of the Cold War, which is led by America. And that system is about military power. It is about a zero-sum game. That means if I win, then you have to lose. That's a zero-sum game. It is about balance of power politics. And that is what the colonist led by America. That means I'm not talking of what is called the global North nations, which is America and the industrialized West, which is 20% of the world population. They follow this model. एक और मॉडल है, a new model that has come up, and that came because of China, the rise of China. उस मॉडल में चाइना और रशिया भी शामिल है, because Xi Jinping and President Putin, they are completely aligned in their vision. They have a lot of differences, that is besides the point, but as far as the new world order is concerned, they are completely aligned, and this order is about development. This order is about Belt and Road Initiative. And Belt and Road Initiative is where today 151 countries out of 193 in the world are on board. So वो जो third world countries थी, what do they need? They need respect, they need development. वो सब इधर जा रहे हैं. So 80% of the world actually is gravitating towards the model which is supported by two great powers, China and Russia. So ये है ओवरऑल एक जो इस समय सिचुएशन है. अच्छा, अभी क्या है कि द मोदी गवर्नमेंट डिसाइडेड, इंडिया डिसाइडेड that look, we want to be with the Americans and the global North nations. ये एक colonial mindset है about a zero sum game कि हम जीतेंगे वो तो दूसरे को हारना है. I forgot to mention this. On the other side, their model is of win-win. Win-win का मतलब क्या है? And this actually comes from the Chinese philosopher Confucius, which basically means it's about harmony. If I talk of, let's say, the human body, the brain has a role, definitive role, heart has a definitive role, lungs का अलग काम है, but they all have to work together for the body to function. That is harmony. That means in the universe, there are different countries, big and small, they all have a place, they all need respect, so there is a possibility of win-win through cooperation. हो सकती है. And this is what Putin also agrees with. So हमने ये तय किया है that we need to be close to the Americans. So although we are a global South nation, because we are a developing country, but we want to be identified with the global North, like the Prime Minister now is going to the G7. On the other hand, जो 80% world है, as I said, they are with these people. अब देखिए क्या हुआ. Very interesting thing. Starting from Obama, and especially, as I said, the world changed in 2017. All the American administrations, until the Biden administration, that means until the 20th of January 2025, till Trump became the president, the thinking was that इस area में, because this is where the contestation has to happen, and the strength of the Americans is their military power, we should have a security competition with China. This is the American thinking because this is their strength. For example, in the Western Pacific itself, something like 330 US military bases surround China today. Now let's see this region that I am talking about, very interesting region. इसकी एक साइड पे you have ASEAN in the east. Now what have the Chinese done? Americans created ASEAN. Chinese in 2001 offered them the FTA, free trade agreement. अब वो उसको बढ़ा रहे हैं. They are coming up with a new free trade agreement which includes artificial intelligence, the fourth industrial revolution, technologies. I'm sorry I'm going a little fast because a lot of area has to be covered. Quite happy to take the questions after that. So एक साइड पर तो ये है. So basically what they have done, the Chinese have done is that आज एक situation है जहाँ ASEAN nation, 10 member nation, they do not want war. They do not want to be identified close to America. They want prosperity. They want to stay neutral.
जो allies भी हैं अमेरिका के, like Japan and South Korea, they've also done a triangular economic cooperation with China. Why China? Because China today is an economic superpower. China today does 31% of the world manufacturing. China today is the hub of global supply chains. सब कुछ वहीं बनता है. So एक साइड पे तो चाइनीज ने ये आसियान में कर दिया, when you look at Asia Pacific. दूसरी तरफ देखिए, at the other extreme is Africa. Africa is a continent of 54 nations. As I talk to you, 52 nations right now are in Henan province of Africa with Xi Jinping discussing about how to take the economic projects forward. So there is a total sway of America and the Russians, and the colonists have been thrown out from Africa. अमेरिका को निकाल दिया, फ्रांस को निकाल दिया, सबको निकाल दिया. कहने का मतलब ये है, at the two extremes, when you look at the three great powers, all three great powers are involved. आसियान में भी इन्वॉल्व हैं, वो मिलिट्री अपना कर रहे हैं, और यहाँ अफ्रीका में भी हैं. बीच में हम बैठे हैं साउथ एशिया. यहाँ क्या हो रहा है? तो हो ये रहा था, until the Biden administration was here, इंडिया को ऑफर किया गया था कि आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाइए एज अ मिलिट्री बुलवार्क अगेंस्ट चाइना इन द इंडियन ओशन रीजन. वाई इन द इंडियन ओशन रीजन? बिकॉज एनुअल ट्रेड चाइना का, विच कम्स फ्रॉम लेट्स से द गल्फ और द गल्फ ऑफ ईडन, वो जो पूरा आता है यूरोप से आता है ट्रेड, $3 trillion का, it passes through Indian Ocean, it passes through the Western Pacific. So this is their vulnerability. Trade है उनका. तो इंडिया को रोल दिया गया and India happily took it. We have signed all the military agreements of America और हम उनका अब नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं. Once we were very happy till the end of the Biden administration that now we are a military bulwark against China and we get a lot of respect from the Americans. Not only that, the Americans also were supporting us as the biggest country in South Asia until the Biden administration was there. तो इसमें हम बहुत खुश थे. So एक narrative चला हमारे यहाँ, started by the External Affairs Minister, that we are also in a regional competition with China. हमारी जो आज जीडीपी है वो 3.9 ट्रिलियन है, विच इज बेसिकली सर्विस बेस्ड. चाइना की 19 ट्रिलियन है, विच इज कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, एंड इट इज गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, विच इज व्हाट दे कॉल द न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस. वो एक अलग चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके ऊपर है, चलेगी वो. तो कहने का मतलब ये है कि एक हमने ये सोच बनाई कि अगर अमेरिका इज इन अ ग्लोबल कंपटीशन विद चाइना, वी शुड ऑल्सो बी इन अ रीजनल कंपटीशन विद चाइना. और दोनों देशों की प्रॉब्लम क्या है? इट इज अ कॉलोनिस्ट माइंडसेट दैट वी आर नॉट हैप्पी विद द राइज ऑफ चाइना. कि एक मुल्क सक्सेसफुल हो गया है, हमको उससे दिक्कत है, बिकॉज ये एक जीरो सम मेंटालिटी है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट द होल थिंग. यू सी दैट एज फार एज द चाइनीज आर कंसर्न्ड, as far as the Americans are concerned, they have that capability to compete with China. हम नहीं कर सकते हैं compete. क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, नेशनल पार्क की 3 होती हैं चीज़ें हार्ड पार्क की. उन तीनों चीज़ों में हम चाइना के आसपास भी नहीं है, टेक्नोलॉजी में भी नहीं है, इकोनॉमिक पावर में भी नहीं है, मिलिट्री पावर में भी नहीं है. तो हमारे लिए सबसे बेहतर यही था कि हम उनसे बात ही ना करें. वो हमें मौका मिल गया, जो गलवान हुआ वहाँ हमें मौका मिल गया, दैट वी शुड नॉट हैव नॉर्मल रिलेशन विद चाइना. इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कीप आस्किंग मी, अब क्या होगा, नॉर्मल होगा नहीं होगा? कुछ नॉर्मल नहीं होगा, बिकॉज हम चाहते नहीं हैं. बिकॉज अगर नॉर्मल हो गया तो दिक्कत क्या है? देन देयर विल बी कोऑपरेशन. Chinese already approached us and they said that we as two big countries, we should work together for the betterment of the small countries in South Asia. And they gave a formula also to Prime Minister Modi. And the formula is China India Plus. Plus means a small nation. That let China and India work together, let's say for the connectivity, for the development of Sri Lanka, for the development of Maldives, for Nepal.
وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ ان کی ڈیپ پاکٹس ہیں, انفراسٹرکچر بلڈنگ قابلیت ہے, تو وہ آٹومیٹکلی لیڈر بن جائیں گے. تو بیسٹ ہے کہ آپ اس سے بات نہ کریے. ابھی کیا ہوا ہے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہیز کم, انہوں نے فارن پالیسی بدل دی ہے. ٹرمپ فارن پالیسی از میک امیریکا گریٹ اگین, which basically means that he wants to build the national power of America in very simple terms. He wants to get the manufacturing back, which in any case is outdated, but that is besides the point. And as far as the Western Pacific is concerned, a realization has come in the US military that the relative power of US military vis-a-vis the People's Liberation Army has declined, which is the truth. So that needs to be built up. Recently, جو ڈیفینس سیکرٹری ہیں امریکہ کے, پیٹ ہیکسٹ, he was there. He went to Philippines. Now there are two hotspots there in West Pacific, which is the Taiwan and the South China Sea. So he is gone there. Now we are feeling lost. ہم lost کیوں فیل کر رہے ہیں کہ کیا کوڈ کو اہمیت ملے گی نہیں ملے گی, are we still the security provider or not for the Indian Ocean region? That clarity is not coming. ہم نے کیا کر دیا ہے in the meantime, which is very interesting. 2014 میں ساک کا سمٹ ہوا تھا نیپال میں, کاٹمانڈو میں. سو ساک کے اندر there are 3 member countries, which is Nepal, Sri Lanka and Pakistan. They proposed that China, which had an observer status, اس کو فل ممبر بنا دیا جائے. انڈیا اپوز دیٹ, کیونکہ کنسنسس سے چلتا ہے, تو بات رفع دفع ہو گئی. بٹ 2016 میں پھر اری اٹیک ہوا. 2016 کے اندر جو سمٹ تھی وہ اسلام آباد میں ہونی تھی, تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا. بیسیکلی انڈیا مووڈ آؤٹ آف ساک ان 2016 اینڈ دین وی ڈیسائیڈیڈ دیٹ وی ہیو ٹو موو ان ٹو بمسٹیک. ہم نے وہاں فوکس کیا بمسٹیک میں. ہم نے کیا کیا, 2 جو ملک تھے ساک کے, پاکستان, مالدیوز, اس کو ہٹا کے بمسٹیک کے اندر یو برنگ ان تھائی لینڈ اینڈ یو برنگ ان میانمار. یہاں ہم نے فوکس رکھ دیا. دین دی ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جسٹیفائڈ دیٹ, ایکسپلین ٹو اس دیٹ وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو فوکس آن بمسٹیک. وہ اس لیے کیونکہ مودی گورنمنٹ کی پالیسی ہے ایکٹ ایسٹ پالیسی. تو ایز فار ایز دا لینڈ بارڈرز آر کنسرنڈ, پاکستان ایک طرف ہے, چین ایک طرف ہے, وہاں ہم کچھ خاص کر نہیں سکتے. اگر ہم کو پروجیکٹ کرنا ہے کہ ہم ایک بڑی طاقت بن گئے ہیں, تو ہم کو دکھانا پڑے گا کہ ہماری کچھ اسٹریٹجک ریچ ہے کہیں پر, تو وہ صرف اوشن میں ہو سکتی ہے ود دی ہیلپ آف دی امریکنس. تو ہم نے کیا کیا, بمسٹیک کو دین وی سیڈ ناؤ اٹ از الائنڈ ود آر ایکٹ ایسٹ پالیسی. And then Jay Shankar repeatedly told us also that this is also aligned with the American Indo-US, Indo-Pacific policy. مطلب ہم پورے align ہو گئے ہیں, تو basically riding on the Americans, we want to project that we are in a competition with them. کہنے کا مطلب یہ ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے, کہ ہم نے ساک کو اور ساؤتھ ایشیا کو اسٹریٹجیکلی چھوڑ دیا 2016 میں. اب جب آپ کوئی جگہ چھوڑ دیتے ہیں, کوئی اور آ کے بھر لے گا اس کو. اب چائنیز نے کیا کیا تھا, ان کی بیلٹ اینڈ روڈ پر ایکسیپٹ فار پاکستان اینڈ بھوٹان سب کنٹریز نے اس کو جوائن کیا ہوا ہے بیلٹ اینڈ روڈ کو. تو ان کی شیڈو تو آلریڈی وہاں آ گئی تھی. تو ابھی دیکھیے آپ اوور آل سچویشن کیا ہے. اوور آل سچویشن یہ دکھتی ہے فی الحال کہ ہم نے ساؤتھ ایشیا کو چھوڑ دیا. انفیکٹ ابھی جو ہمارا یہ پارلیمنٹ آل پارٹی ڈیلیگیشن گیا تھا آفٹر آپریشن سندور, وہ نیبرہڈ میں کہیں نہیں گیا تھا. تو ہمیں کوئی خاص دلچسپی ہے نہیں نیبرہڈ میں, اس کو ہم میں کوئی دلچسپی ہے نہیں. ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں بیکاز ناؤ وی آر لوکنگ ایٹ آ اسٹریٹجک ریچ وچ گوز ٹو دا بیسیکلی دا ایسٹ اینڈ دین اٹ گوز ٹو دا مڈل ایسٹ, واٹ وی کال ویسٹ ایشیا. ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اپنے. دیکھیے یہ ایک بیسک رول ہوتا ہے ملٹری اسٹریٹجی کا, یو نیور وینچر آؤٹ بفور انشورنگ دیٹ یور ہوم بیس از سیکیور. ہم نے اپنی ہوم بیس کو خالی چھوڑ دیا, وہاں پہ چین کی شیڈو آ گئی. تو اب میں یہاں پہ اس کو اتنی بات کو یہاں پوز کرتا ہوں
अब बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ, बट लेट मी से अ फ्यू मिलिट्री थिंग्स ऑल्सो, जिससे वी अंडरस्टैंड द ऑपरेशन सिंदूर बेटर. तो इसमें मैं आपको 3 बातें बताना चाहूँगा मिलिट्री वाली. पहली बात, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, जब लड़ाई हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, एक सीज फायर लाइन बनी थी 1 जनवरी 49 को. उसके बाद हमने जंग लड़ी पाकिस्तान के साथ, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी. सी डोंट वरी अबाउट बांग्लादेश. बांग्लादेश वॉज अ गॉन केस फॉर ईस्ट पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान जो था in any case was 1,200 kilometers across India. There is no way they could have brought their operational logistics there for war. वो नहीं हो सकता था, वो तो जाना ही था. बट इम्पॉर्टेंट बात ये है, किसी भी जंग में हम वो मिलिट्री लाइन को ऑब्लिटरेट कर ही नहीं पाए. जो सीज फायर लाइन थी आज वो कायम है विद अ न्यू नेम, लाइन ऑफ कंट्रोल. तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें ये करना चाहिए था कि 1990 में जब प्रॉब्लम शुरू हुई कश्मीर की, जब पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर अपनी शुरू करी, हमको अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बनानी चाहिए थी. अगर हम अपनी कन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटी बढ़ाते, दैट वुड हैव डिटर्ड पाकिस्तान. हमने वो नहीं किया 35 साल. तो एक जो मिलिट्री इशू था प्रॉक्सी वॉर का, प्रॉक्सी वॉर इज अ मिलिट्री इशू, जिसको आपको मिलिट्री मीन से खत्म करना था बाय बिल्डिंग अ कैपेबिलिटी दैट वुड डिटर पाकिस्तान और टेल पाकिस्तान दैट लुक देयर विल बी अ प्रॉब्लम इफ यू कंटिन्यू विद व्हाट यू आर डूइंग. वी नेवर डिड दैट. नाउ विद द कमिंग ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, ऑब्वियसली इट हैज बीन एलिवेटेड टू अ हायर लेवल. तो ये हमने कर दिया एक. तो अब मैं थोड़ा सा पॉज करके वापस जाता हूँ. आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी भूल गया हूँ, वो बहुत ज़रूरी है. वो बात ये है कि 5 अगस्त 2019 को हमने 370 हटाया, बिना सोचे समझे कि इसका सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. हुआ क्या कि 6 अगस्त को पार्लियामेंट में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि वी विल बी मेकिंग नाउ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज. उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान हिस्सा होगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अक्षय चिन्ह हिस्सा होगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, लद्दाख की. द सेम डे चाइनीज रिजेक्टेड दैट. दे प्रोटेस्टेड. दे सेड अक्षय चिन्ह इज विद अस, इट वाज ऑलवेज विद अस, यू कांट शो इट ऑन योर मैप्स, न्यू मैप्स एज पार्ट ऑफ द लद्दाख यूनियन टेरिटरी. 11 अगस्त को 2019 जयशंकर एज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, he traveled to China to meet up with his counterpart Wang Yi to explain to him that look, we have made the maps, but it does not change our position on the ground as far as line of actual control is concerned. China rejected that suggestion. Meanwhile, 370 जब हटा तो पाकिस्तान में भी खलबली मची. The then Prime Minister Imran Khan and the Army Chief Bajwa, General Bajwa, they both went to China to confabulate with the leadership there. Xi Jinping gave personal time to जनरल बाजवा और उन्होंने जनरल बाजवा को ये कहा कि आप डेवलपमेंट पे फोकस करिए. मुझे ये बात ऐसे पता है कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की जो सरकार थी उस समय इमरान खान की, दे रिलीज देयर फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड आई वाज वन इंडियन दे हैड इनवाइटेड देयर. तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी बोले, वहाँ आर्मी चीफ भी बोले. उसके बाद आर्मी चीफ और मेरी बातचीत हुई. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इट ऑल टॉक्स अबाउट कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट द कश्मीर इशू? सो ही टोल्ड मी दैट आई हैड अ लॉन्ग मीटिंग विद शी जिनपिंग एंड शी जिनपिंग टोल्ड मी पर्सनली दैट यू फोकस ऑन डेवलपमेंट. व्हाट बाजवा डिड नॉट टेल मी इज दैट शी जिनपिंग ऑल्सो टोल्ड हिम, जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है पाकिस्तान की, वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. तो हुआ क्या, अगर हम लोगों ने ध्यान से देखा होता तो 2 चीज़ें होनी शुरू हो गई 2019 से. ऑन द पॉलिटिकल साइड, द एंटायर चाइनीज लीडरशिप, शी जिनपिंग डाउनवर्ड्स, दे केप्ट सेइंग दैट वी विल सपोर्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी.
کھلے عام بولتے تھے وہ, ہم نے اس کو نظر انداز کیا. دوسری طرف the Pakistan Air Force and the PLAF, PLA Air Force, they started doing advanced exercises 2019 سے شروع کر دی. کاراکرم میں کرتے تھے وہ, جو ہمارا کامبیٹ ایریا وہاں انہوں نے شروع کرا, ہم نے اس کو دھیان ہی نہیں دیا. ناٹ اونلی دیٹ, اس سمے سے کیا دیکھا ہم نے 2021 کے اندر انہوں نے پاکستانی آفیسرس کو اپنی ویسٹرن تھیٹر کمانڈ میں ایمبیڈ کر لیا. ویسٹرن تھیٹر کمانڈ از ریسپانسبل فار اروناچل پردیش. کہنے کا مطلب یہ ہے جو ان کے امپورٹنٹ جتنے بھی ملٹری آرگنائزیشن تھے وہ اس کا حصہ بنا لیا ان کو, سو دیٹ دے بیٹر انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ٹیکل انڈیا. ہم نے سب چیز کو دیکھا ہی نہیں بالکل. تو سچویشن یہ ہے کہ ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ہماری ملٹری لیڈرشپ کو, کہ اٹ از نو لانگر آفٹر 5th August 2019 about India Pakistan. It is no longer about a two-front war. چائنا آپ سے لڑائی نہیں لڑے گا, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے لڑائی لڑنے کی. It was since then about one front reinforced war, جو میں 2019 سے اپنی 2 کتابوں میں لکھ چکا ہوں. Basically what meant that was, I explained that this is the term that I coined, and I said what this is, you will fight with Pakistan, but China will be helping Pakistan to the hilt without showing its hand. اس لڑائی کی آپ تیاری کریے گا, بٹ ہمارا وہ نیریٹو تھا, ہم نے اس کو قائم رکھا. تو ابھی آپ کو ایک اوور آل سچویشن میں نے بتا دی ہے کہ یہ تھا بیک گراؤنڈ اس کا سندور کا. اب ہوتا ہے آپریشن سندور. آپریشن سندور کی 3 خاص باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات, آر ریسپانس واز ڈسپروپورشنیٹ. ایک ٹیرر اٹیک ہوا, ہم نے اس کو جواب دیا ود اے کنونشنل وار, دیٹ ٹو ایٹ دا ہائیسٹ لیول. ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں دی 2 ایئر فورسز ول لیڈ دا وار پیریڈ. اور یہ ہم نے پہلی بار نہیں کیا, ہم نے کیا تھا بالا کوٹ میں پہلی بار 2019 میں, اینڈ وی ایکسپوز دا لمیٹیشنز آف دی انڈین ایئر فورس. مثال کے طور پر ہم نے بالا کوٹ میں ہماری ایئر فورس نے آپریشن بندر کرا, چپکے سے جا کر وی کاٹ دیم انویئر, ان کے ریڈارز بند تھے, وی کراس دیئر ایئر اسپیس, اور ہم اپنا بی وی آر چھوڑ کر آ گئے. نیکسٹ مارننگ دے ریٹارٹیڈ, دے کیم بیک ٹو اس ود اے ریسپانس وچ از واٹ دے کال دی آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ. یاد ہوگا آپ لوگوں کو, دن کے ٹائم انہوں نے کیا, اور ان کا فوکس کیا تھا؟ ان کا فوکس تھا ملٹری ٹارگیٹس, ناٹ نان ملٹری ٹارگیٹس. آپ کبھی ایئر فورس نان ملٹری ٹارگیٹس پہ استعمال نہیں کرتے بابا. ان کا فوکس تھا ملٹری ٹارگیٹ, اور انہوں نے کیا دیکھا, ہماری الیکٹرانک وارفیئر بہت کمزور تھی. سمپل ورڈز میں الیکٹرانک وارفیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قابلیت کی آپ دوسرے کا کمیونیکیشن کو جیم کر دیں. تو ہمارے جو آفیسر تھے ان کا کمیونیکیشن جیم ہو گیا, ہی واز ٹیکن پرزنر آف وار. ہم کچھ لیسن نہیں سیکھے, بٹ وہ سیکھ گئے کہ الیکٹرانک وارفیئر پہ فوکس کرو. دس از دا کی ٹو دا ماڈرن وارفیئر. الیکٹرانک وارفیئر ہوتا ہے واٹ از کالڈ, آئی وونٹ گیو اے ٹیکنیکل ایکسپلینیشن, اٹ از سم تھنگ دیٹ از کالڈ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم. بہت ضروری چیز ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایٹماسفیئر میں 7 طریقے کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں. ایک مثال کے طور پر ہے ویزیبل لائٹ. جیسے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, دس از اونلی پاسبل بیکاز ویزیبل لائٹ ہے. سملرلی ایک ایکسٹریم پہ ہے ان کے ریڈیو ویوز, جس سے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں. ایکس رے ہوتی ہے جو ہماری ایکس رے مشینز میں کام آتی ہیں. مائکرو ویو ہے جو ہم مائکرو ویو چلاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ جو چیز ہے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم, اگر آپ کسی بھی فوج کے پاس ایک قابلیت ہے اس میں کمپیٹ کرنے کی, تو وہ لڑائی جیت جائے گا. دوسرا اگر اس میں نہیں کمپیٹ کر جائے گا وہ لڑائی ہار جائے گا. اٹس سمپل ایز دیٹ. دس از ٹوڈے دا کرکس آف دا ماڈرن وارفیئر, ٹو ہیو اے superiority in the electromagnetic spectrum, and the part of that is electronic warfare. How do you jam the communication of the enemy? This is the lesson that they learned. As a consequence of that, دیکھیے ہم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی.
کیوں پرتیوادی وہ بتاتا ہوں میں. کیونکہ پرائم منسٹر مودی نے مئی 2014 میں جب یہ آئے ہیں, انہوں نے اپنی پہلی کمبائنڈ کمانڈر کانفرنس کری اکتوبر 2014 میں, جس میں انہوں نے یہ کہا کمبائنڈ کمانڈرز کو کہ جو ہمارا اینمی ہے وہ ویزیبل ہے, تھریٹ جو ہے نو, اینمی از انویزیبل, دا تھریٹ از نون. اٹس اے فیمس اسٹیٹمنٹ ناؤ میڈ بائی دا پرائم منسٹر, بیسیکلی سیئنگ دیٹ وی ہیو ٹو فوکس آن دا ٹیررسٹ اینڈ ناٹ آن دی پاکستان which is harboring the terrorists or which is the hub of the terrorism. تو وہ فوکس وہ بن گیا کہ سب کنونشنل وار ہمیں کرنی ہے, ہمیں کاؤنٹر ٹیررزم کو کرتے رہنا ہے. اسی سمے مجھے یاد ہے ایئر چیف ہمارے ہوتے تھے, ایئر چیف مارشل اروپ راہا. میں نے ان سے پوچھا بھی تھا, میں کہا یہ آپ کر کیا رہے ہیں, بیکاز ہی اسٹارٹیڈ آسکنگ اے رول کہ ایئر فورس کا بھی رول ہونا چاہیے. ارے بابا, ایئر فورس کو یہ تھا کہ ساری گلوری انڈین آرمی کو مل رہی ہے, تکمے مل رہے ہیں, ان کو آنر مل رہا ہے ٹیررسٹ مارنے کا, تو ہمیں ملنا چاہیے. سو دیٹ انٹائر لائن آف لیڈرشپ آف دی انڈین ایئر فورس, دے آلسو وے ویری ہیپی کہ ہمیں بھی ایسا رول دیجیے کہ ہم ٹیررسٹ کے خلاف کام کریں. تو ہم نے 2019 میں کوئی لیسن نہیں سیکھا. اب دیکھیے سندور میں کیا ہوا, ہم نے پھر وہی کیا. ہم نے سندور میں اس بار جو پاکستان کی جو سرحد ہے اس کو ہم نے بریچ نہیں کیا, ایئر اسپیس کو اسٹینڈ آف ویپن سے, بٹ وی ہٹ دا ٹیررسٹ ٹارگیٹ, وہ ہم نے کیا. پر اس بار وہ تیار بیٹھے تھے. آئی وونٹ گو ان دا ٹیکنیکل ڈیٹیلز, آل ٹو ٹیل یو از دیٹ اٹ از ناٹ ریئلی اباؤٹ دا J-10 اینڈ دا PL-15 missile. It is about the ecosystem that was backing that. And when I say ecosystem, what am I talking about? I am talking about the advanced exercises that the Pakistan Air Force had been doing since 2019 with the PLAF. اور اس کے تحت وہ کیا کر رہے تھے. ایکو سسٹم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی سیٹلائٹس, آپ کے ایئر بورن ایسٹس, ایئر بورن میں جیسے AWACS ہوتا ہے جس سے آپ پتہ کرتے ہیں کتنے ٹارگیٹس ہیں, اس کو ٹریک کرتے ہیں. آپ کے گراؤنڈ ایسٹس وچ از آپ کی ایئر ڈیفینس وغیرہ, اور آپ کے فائٹرز, اس سب کو آپ نیٹ ورک کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جو اگر آپ کا جو ہوائی جہاز ہے, مان لیجئے وہ صرف 400 کلومیٹرز تک دیکھ سکتا ہے, بٹ بیکاز ناؤ اٹ از لنکڈ ود دا سیٹلائٹ, اب وہ 1000 سے زیادہ دیکھ سکتا ہے. ایون بفور دی اینیمی سیز یو, یو سی دی اینیمی. اوپر سے آپ نے اپنی الیکٹرانک وارفیئر, ایز آئی ٹولڈ یو, دے فوکس دیر آفٹر 2019 بالاکوٹ. تو جب انہوں نے میسائل فائر کری ہے, ایک تو ہم کو پتہ نہیں چلا کہ میسائل فائر ہوئی ہے, اور دوسرا کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو سسٹم تھا رفال کا, اس میں یہ قابلیت نہیں تھی کہ اس میں ہم آئسا ریڈار بولتے ہیں جو PL-15 میں ہے, وہ کافی پاورفل تھا, اس نے اس کو جیم کر دیا. تو جو ہمارا پائلٹ تھا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میسائل نے مجھے لاک کر لیا ہے. ایک بار میسائل لاک کر دیتی ہے اور آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے ہیں, ڈیفیوز کر سکتے ہیں, اٹ ول گیٹ یو. تو واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ اٹ از ون پارٹ buying the fighters, buying the PL, the missiles. The key thing is آپ کو اس میں بہت ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. ابھی جیسے ہمارے یہاں فوکس ہوتا ہے کہ آپ فائٹر خرید لیجئے صاحب, رفائل لے لیجئے, ارے اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اب وہ وقت چلا گیا جب ڈاگ فائٹس ہوا کرتی تھی کہ ایک ہوائی جہاز دوسرے سے بھڑ گیا. ناؤ وی آر لیونگ ان دی ایج آف بیونڈ ویژول رینج میسائلز. 300, 350 کلومیٹر, 200 کلومیٹر سے فائر کر رہے ہیں. وہ آپ تبھی فائر کریں گے نا اگر آپ کے پاس ایک ایکو سسٹم ہے, جس کو پاکستان ایئر فورس نے سمجھایا انٹرنیشنل میڈیا کو, دیٹ از کالڈ دا ملٹی ڈومین آپریشنز with a special focus on electronic warfare, and this takes years and years. So by doing a disproportionate response, let me tell you a key reason جو میں آگے آؤں گا ابھی, why Pakistan's profile has gone up in the world capital. A key reason of that is, there are two key reasons. One is that they saw that the Pakistan military has emerged out of this 4 days of Operation Sindoor as a peer military competitor of the Indian military. بہت بڑی بات ہے.
ये पेयर कॉम्पिटिटर उनको दिखाई दिया, तो उनकी जो मिलिट्री पावर की जो वो थी, औकात थी, वो बहुत बढ़ गई. They have the military power. And the second thing that the world saw is that the Chinese stood by them. Chinese are the people who had the gumption to walk the talk. बहुत बड़ी बात है. तो पहली तो ये बात हुई, डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स से हमने अपनी इंडियन एयरफोर्स की काबिलियत को दिखा दिया और हमारे लॉसेज हुए हैं. आई डोंट वांट टू गो इनटू दोज लॉसेज एट दिस स्टेज. तो कहने का मतलब ये है कि आप जो हम बोल रहे हैं, देखिए, वी हैव टू बी ऑब्जेक्टिव अबाउट थिंग्स. और ऑब्जेक्टिविटी हमें ये बताएगी कि अगर आप ज्योग्राफी देखिए पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है जो इलोंगेटेड है, उसमें डेप्थ नहीं है. उसकी जितनी भी एयर फील्ड्स हैं वो 2050 किलोमीटर के अंदर अंदर हैं सारी की सारी मैक्सिमम. और जो हमारा S-400 है, हमारे ब्रह्मोस है, वो उसको इजीली कवर कर सकता है. नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे हैव गॉन टू चाइना, एंड चाइना इज गिविंग देम अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द J-35A and the HQ-19, which is the air defense system, बहुत powerful air defense system है. It is meant for the IRBMs, intermediate range ballistic missiles, and the KJ-500, which is the airborne assets. तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जो उनको मिल रहा है. एंड आई वोंट बी सरप्राइज, वो पैसे वैसे नहीं लेंगे, उसको ऐसे ही दे देंगे, क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है दो तरीके से. एक तो फ़ायदा हो रहा है कि विदाउट फाइटिंग उनके जो हथियार हैं दे आर गेटिंग ऑपरेशनली वैलिडेटेड, उनकी आर्म सेल बढ़ेगी. दूसरा फ़ायदा हो रहा है, दे आर कटिंग इंडिया टू साइज थ्रू पाकिस्तान. बहुत फ़ायदा है. तो कहने का मतलब ये है, दोनों ने लेसन लड़े हैं, सीखे हैं, पर हमारा लेसन जो है हमें उस पर ध्यान देना है. दूसरी बात, न्यू नॉर्मल क्रिएट करा है. जैसे बताया था अभी कि ये पॉज हुआ है, सीज फायर नहीं है, कि जहाँ पर दोनों साइड बैठ के बात करती हैं और तय करती हैं कि ठीक है ये टर्म्स होंगी सीज फायर की. ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी साइड इसको लिफ्ट कर सकती है. कहने का मतलब है, वी आर टुडे लिविंग एट द एज ऑफ वॉर. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, because we are up against a combination of Pakistan and China, and it's extremely lethal. As I said, it's a one front reinforced war that we are looking at. And all this talk that I keep hearing, कि अब drones चाहिए, of course you need drones, but more than drones, what you need is, in which nobody is talking about in my country, are the capabilities in the virtual domains of war. And when I say virtual domains of war, I am talking of three things. I am talking of electronic warfare, which is the electromagnetic spectrum. I am talking of cyber capabilities, and I am talking of space. They all link up. Because if you lose here, you lose the war. Simple. Communication आपका बंद, आपको दिखेगा नहीं, आप blinded. It's over. The war is over. क्या लड़ेंगे आप? तो वो आपको पहले बनाना है. फिर आपको एयरफोर्स का इकोसिस्टम बनाना है. So all these things are there, and we are living dangerously. That is the second point. The third point is that the war has changed. लड़ाई बदल गई है. अब ये अभी लोग, the military leadership will hesitate to discuss this. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ लड़ाई कैसे बदली है. वो ऐसे बदली है कि एक तो पूरी बैटलफील्ड जो है, अभी आप जो डिफेंस कवर करते हैं उनको आइडिया होगा. हमारे यहाँ क्या होता है, आर्मी के अंदर वो डिव कमांडर होता है, डिव कमांडर के बाद कोर कमांडर होता है, उसके बाद आर्मी कमांडर होता है. दी होल आइडिया ये होता है कि साहब वो सामने जो है एक फ्रंटेज है, तो पहले दुश्मन जो है वो फ्रंटेज को उसको ब्रीच करेगा, तो वो डिव कमांडर लड़ाई लड़ेगा. जब वो ब्रीच हो जाएगी तो कोर कमांडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो लड़ेगा. उसके बाद फिर आर्मी कमांडर लड़ेगा. तो ये फेजेज में होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. बिकॉज अब जो पूरी है वो एक बैटल स्पेस बन गई है बिकॉज ऑफ मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स. तो पहली बात जो हमें अब सोचनी है कि हमें अपनी इंडियन आर्मी को डाउन साइज करना है ड्रास्टिकली. वी हैव टू पुट द मनी इन द वर्चुअल डोमेन्स ऑफ वॉर. वी हैव टू पुट द मनी इन इंडियन एयरफोर्स. क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है आपने इतने बड़े बड़े जो आलीशान, वो हर अफसर के पास एक हेडक्वार्टर है. यू विल बी एबल टू हाइड नथिंग फ्रॉम द चाइनीज सैटेलाइट्स. 4 सैटेलाइट्स हैं आज दुनिया में जिनकी ग्लोबल रीच है. जीपीएस अमेरिका का, गलीलियो यूरोप का, ग्लोनॉस रशिया का, और बेदू चाइनीज का. और इन चारों में से बेदू इज द नंबर 1. I don't want to go in the technical details. They are the best.
because they are the latest. They have all the latest technology. So the point I'm making is that if you don't downsize your army, and when I'm saying downsize the army, I'm saying cut your headquarters. Because आपके headquarters तो दिखेंगे उसको. आप कहाँ लेके जाएंगे headquarters को? At best what you can do is have some advanced headquarters. So ये हमें कुछ lessons हैं जो सीखने हैं. अभी I'm coming to a very important thing, and that is what after Sindoor. देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. As I said, पाकिस्तान की प्रोफाइल बढ़ गई है. कैसे बढ़ी है कि तीनों ग्रेट पास टुडे आर फैसिलिटेटिंग पाकिस्तान. अमेरिका को चाहिए पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म के लिए. इन लोगों का रिश्ता है 9/11 से बहुत पुराना रिश्ता है, वो टूटा कभी नहीं था. एंड आसिफ मुनीर, बिकॉज ही इज नाउ बिकम अ 5 स्टार, वो अटेंड कर रहे हैं कल उनकी 250th आर्मी डे परेड. सॉरी, या आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल. तो अमेरिकन हैप्पी विद देम. द वर्ल्ड डजंट बिलीव आर टॉक ऑफ टेररिज्म. वो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज टेररिज्म फिनिश्ड इन 9/11. उसके बाद जो चला था, जब बुश जूनियर ने बात शुरू करी, यू आर विद अस और यू नॉट विद अस, दैट वाज द डेज ऑफ टेररिज्म. नाउ बिकॉज एज आई सेड द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इज शिफ्टिंग, this is the day really of the conventional wars और hybrid wars. उसमें टेररिज्म भी हो सकती है, बट टेररिज्म कैनॉट बी बाय इटसेल्फ. तो ये आपका नैरेटिव कोई नहीं सुन रहा है. अच्छा, चाइना जो है सेकंड ग्रेट पावर, उनके साथ खड़ा हुआ है. और जो रशिया है, एज आई सेड, दे आर, उनकी विजन जो है वो अलाइंड है. इनफैक्ट अभी रिपोर्ट आई है कि प्रेसिडेंट पुतिन, ब्रिक्स की समिट हो रही है 6-7 जुलाई को ब्राज़ील में. वहाँ पे 2 मुल्क, चाइना और रशिया, प्रपोज करने वाले हैं पाकिस्तान का नाम एज अ परमानेंट मेंबर. वो दूसरी बात है, होगा नहीं, बिकॉज इट वर्क्स बाय कंसेंसस. इनफैक्ट इसी के तहत फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया सर्गी लैवरोव, ही इज़ कमिंग, आई थिंक टुमारो और डे आफ्टर ही इज़ कमिंग टू इंडिया. And one of the things before starting from Moscow, he said is, what I want to discuss is RIC. RIC stands for Russia, India, China. This is the foundation of BRICS. And BRICS is the key institution of the global south. What I said, where 80% of the world is going, which is about development, which is about prosperity, which is about win-win, which is about indivisible security. वो एक अलग चीज़ है. तो he is coming just to discuss that. Obviously he'll be asking our leadership कि वहाँ पर Prime Minister Modi has to come. तो will he meet with Xi Jinping or not, formally or informally? That is important, because अगले साल ब्रिक्स की जो है जिम्मेदारी वो इंडिया के पास आ रही है. तो अब हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, बिकॉज ऑफ अमेरिका 1.3 बिलियन IMF ने लोन दिया है पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक ने 4 बिलियन दिया है, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने 800 मिलियन दिया है, और उनकी जियोपॉलिटिक्स बहुत बढ़ गई है. पूरी अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड, वो सब लिंक्ड है. सेंट्रल एशिया रिपब्लिक, ये सब रिक्वायरमेंट अमेरिकन्स की भी है, रिक्वायरमेंट चाइनीज़ की भी है. तो वो सब की आज जो है हमने ऑपरेशन सिंदूर करके, बाय एंड दे शोइंग टू द वर्ल्ड दैट दे आर अ मिलिट्री कॉम्पिटिटर टू इंडिया, वी हैव एक्चुअली रेज दैट जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल एक्सपोनेंशियली. पहली बात तो ये है. दूसरी बात, जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था, वी हैव अबैंडन्ड सार्क. वी अबैंडन्ड दैट इन 2016. नाउ वी आर इन अ लिम्बो, वी आर इन अ कंप्लीट सस्पेंस कि हाउ मच इंपॉर्टेंस विल द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन गिव टू क्वाड, हाउ मच इंपॉर्टेंस इट विल गिव टू इंडिया बीइंग द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन रीजन, एंड हाउ मच बैकिंग इट विल गिव टू साउथ एशिया. साउथ एशिया में उन्होंने हाथ झाड़ लिए हैं. एक सवाल पूछा था प्रेसिडेंट ट्रम्प से अबाउट बांग्लादेश, एंड ही सेड इट इज बिटवीन द 2 countries, दे कैन सॉर्ट इट आउट. ही इज नॉट इंटरेस्टेड. कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको बता रहा था, दोनों एक्सट्रीम पे तीनों ग्रेट पावर्स इन्वॉल्व हैं. आज खुला मैदान है फॉर चाइना. देयर इज अ स्ट्रेटेजिक वॉइड. इंडिया इज नॉट देयर, अमेरिका डजंट वांट टू कम देयर, एंड चाइना इज वेरी मच देयर. एंड अब आप सोचिए आगे क्या होगा. प्रोफाइल बढ़ गई है पाकिस्तान की. वाई कांट द चाइनीज
put Pakistan as a strategic alternative to India in the SAARC and revive SAARC. SAARC आज भी जिंदा है, हेडक्वार्टर है उसका नेपाल के अंदर. तो इन पॉसिबिलिटीज़ को आप सोचिए कि हम अपने नेबरहुड में देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग स्ट्रेटेजिकली आइसोलेटेड. नेक्स्ट देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, ख्वाजा अली, ही मेड ख्वाजा आसिफ, ही मेड अ स्टेटमेंट 2 या 3 दिन पहले कि वी आर लीविंग शिमला एग्रीमेंट, वी वांट टू गो बैक टू द 1948 UN resolution, and what he said is that we want to call the military line ceasefire line. इसका बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन है, ये मैं आपको समझाता हूँ कितना सीरियस है ये इम्प्लीकेशन. देखिए, जब लाइन ऑफ कंट्रोल बनी थी शिमला एग्रीमेंट के अंडर, उसमें 2 बातें तय हुई थी. पहली बात ये तय हुई थी कि इट विल बी बायलैटरल, वी विल नॉट अलाउ एनी थर्ड पार्टी टू कम इनटू दिस. और दूसरी बात ये तय हुई थी कि नो फोर्स विल बी यूज्ड बाय ईदर साइड टू चेंज दिस लाइन. कहने का मतलब ये है, दोनों साइड उसको टैक्टिकली तो चेंज कर सकते थे, जो हम करते रहते हैं, यहाँ मारा उसने हमारा ले लिया, हमने उनका ले लिया, बट ये दोनों की तरफ से ये तय हुआ था अंडर द शिमला एग्रीमेंट. नाउ इफ दे लीव द शिमला एग्रीमेंट, एंड लेट मी टेल यू, everything that the Chinese do, Pakistanis do, they are constantly taking the advice of China. इसको आप बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा कि चाइना और पाकिस्तान को एक देखिए. अब आप, वो हमेशा एक थे ही, पर हमने उसको 5 अगस्त 2019 के पास उनको ओपनली हमने एक बना दिया, वो गलती करके. तो अब देखिए इसका मतलब क्या है. जब वो बोलते हैं हम सीज फायर लाइन पे जाएंगे, इसका इम्प्लीकेशन बहुत सीधा सा है. एक तो वी आर ओपन नाउ, व्हाट दे से वेरी क्लियरली कि वी आर ओपन टू द मल्टीलैटरल अप्रोच, वी आर ओपन टू द आउटसाइड पावर्स टॉकिंग अबाउट कश्मीर. देखिए, उनका कोर कंसर्न इज कश्मीर, पाकिस्तान का, वो था, वो आज भी है. मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट इज कि सीज फायर लाइन को सुपरसीड किया था लाइन ऑफ कंट्रोल ने. लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई. इफ दे गो बैक देयर, दैट मीन्स वो जो सीज फायर लाइन थी विच इज सुपरसीडेड, उसके जो रूल्स थे जो सीज फायर लाइन के, वो आज लागू नहीं होते. सो दे आर मेकिंग अ केस फॉर अटैक ऑन कश्मीर. प्लीज टेक इट सीरियसली. दिस इज अ केस फॉर द अटैक ऑफ कश्मीर, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है इस देश में. कोई बात ये नहीं समझ रहा है इट इज़ अ वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर. कोई ये समझ नहीं रहा है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स हमारे रीजन में आ गई है. चाइना टुडे इज़ अ डोमिनेंट पावर इन साउथ एशिया. हमने साउथ एशिया छोड़ दिया है, और पाकिस्तान और ये जो दोनों है साउथ एशिया में हमें स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल आइसोलेट करके, मैंने कहा था कि पॉज है अभी ऑपरेशन के अंदर, तो वाई कांट दे लिफ्ट द पॉज. हमसे पहले उनकी तैयारी हो जाएगी. देखिए, जब भी आप कोई चीज़ स्ट्रैटेजी बनाते हैं मुल्क की, you always have to keep 2 things in mind. First is always take into consideration the worst case scenario, not the best case scenario. Number 2, always give more capabilities to your enemy than he actually has, because then you will do well. ये 2 बेसिक बातें हैं, मिलिट्री में भी होती है, वॉर एप्रिसिएशन में. तो मैं आपको ये सब बातें एक बहुत लिटिल टाइम, दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सब्जेक्ट, तो मैं ये आपको बताना चाहता था, बट आई एम ओपन टू क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच.